Hello, welcome to Graduate Guru. We are starting with a new session of the chapter Shares and Mutual Fund. Now, in this part, we'll start with the D part, that is bonus shares and split shares. So, let us start with the first example, which is based on bonus shares and what split shares. So, we have 30th question. Ronak purchased 500 shares of rupees 100 of a company A at rupees 700. After 2 months, he received a dividend of 25%. After 6 months, he also got one bonus share for every 4 shares held. After 8 months, he sold all his shares at rupees 610 each. The brokerage was 2% on both purchases and sales. Find his percentage return on investment. So percentage return on investment is same as rate of return. Return on investment बोलो या rate of return बोलो, it is one and the same. So यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि फर्स्ट कंपनी से उसने परचेस किया है. So we write over here for company A, ठीक है, and we write company A is for what? Purchase. तो यहाँ पे लिखता हूँ for purchase, ये कंडीशन आ जाएगा. Then further we say there are certain values which are given. एक तो face value दिया है which is equal to rupees 100 आ जाएगा. Then we have the market value, मतलब market price दिया है उन लोग ने as 700. Then they have also provided what? The number of shares, brokerage. So यहाँ पे लिखते हैं number of shares 500. Rate of brokerage दिया है. So we write that part. Rate of brokerage is 2%. And they have also provided as a rate of dividend. So this is how much? So it is 25% दिए. So ये सारे conditions हो गए related to which part? Company A. अच्छा, further they have also said he also got one share for every 4 shares held. So यहाँ पे we first do one thing. Since हमें face value, market value, number of shares, brokerage और ये सब चीज पता है, तो सबसे first value calculate करते हैं, it is the brokerage value. So brokerage is equal to क्या आ जाएगा? Rate of brokerage upon 100 into market price. So ये हो जाएगा as 2 by 100 of 700. ये हो जाएगा rupees 14. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ therefore purchase price per share is equal to market price plus brokerage आ जाएगा. So this amounts to 700 हो जाएगा plus 14 हो जाएगा. So this becomes rupees 714. Now once we get this, अब number of shares भी है मेरे पास, therefore amount invested आ जाएगा. So amount invested is equal to purchase price per share into
सॉरी, इट इज नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा. So this value is equal to कितना आ जाएगा? It becomes 714 into 500. So let's calculate this value. तो कितना आ जाएगा? It is 714 into 500. And this amounts to 35700. 35700. एक और जीरो आ गया. सो इतना अमाउंट हो गया. नाउ व्हाट फर्दर दे आर डीलिंग इज डिविडेंड पर शेयर. ये भी ढूंढ लेते. इज नथिंग बट व्हाट? रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन 100 इनटू द फेस वैल्यू. So ये 25% था, तो 25/100 of the face value. So I can say total dividend यहाँ पे आ जाएगा as dividend per share into number of shares. And that amounts to 25 into 500, that is equal to rupees 12500. So ये हो जाएगा 12,500. Now further what they are doing? Now question में clear cut लिखा है कि now bonus shares are what? 1 for every 4 shares. This is what is given. So therefore bonus share for 500 shares is equal to 500 upon क्या हो जाएगा? 4. And 500 upon 4 ये वैल्यू कैलकुलेट किया, so this becomes 125. So अब मैं बोलूंगा मेरा टोटल नंबर ऑफ शेयर्स is equal to, it is 500 plus 125 which is equal to 625 हो जाएगा. So this is the total number of shares हो जाएगा. And can I say अभी आ जाएगा सारे conditions for what? Sales. तो इधर हम लिखते हैं for sales. And जब मैं sales के बारे में बात कर रहा हूं, my face value, अच्छा ये दिया है क्या? नहीं, यहाँ पे सीधा सीधा डायरेक्ट दिया है नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा. अच्छा ये दिया नहीं है, ये हमें यहाँ पे जो मिला वही लिखना है. इट इज 625. अच्छा मुझे ये वैल्यू दिया है विच इज कॉल्ड एज मार्केट प्राइस, जो मुझे दिया गया है 610 आई गेस रुपीस. यस 610. एंड दे हैव प्रोवाइडेड मी द ब्रोकरेज अमाउंट. दैट इज ब्रोकरेज का रेट, नॉट द अमाउंट, 2%. सो यहां से मुझे मिल जाएगा ब्रोकरेज एज द वैल्यू. सो दिस बिकम्स रेट ऑफ क्या हो जाएगा? इनटू मार्केट प्राइस. एंड ये हो जाएगा 2/100 of 610. So this amounts to 610 का 2% is 12.2 rupees. ये ब्रोकरेज अमाउंट हो गया. तो इधर आ जाएगा therefore सेल्स प्राइस इज इक्वल टू, पर शेयर लिख देता हूं, सेल्स प्राइस पर शेयर इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस द ब्रोकरेज. So this is equal to 610 minus 12.12 आ जाएगा. This is in terms of rupees. So ये हो जाएगा 610 minus 12.2. So ये हो जाएगा 597.8
rupees. Yes, this is done. And now we have, इसके बाद, therefore, the total sales is equal to sales price per share into number of shares. So this is equal to, this becomes 597.8 into number of shares जो है वो बन जाएगा 625. So let us calculate this value into 597.8 into 625, and this amounts to 373,625. तो यहाँ पे लिखेंगे रुपीज 373,625. सो ये हो गया मेरा टोटल सेल्स का वैल्यू. एंड अब मुझे उन लोगों ने बोला है फाइंड हिज परसेंटेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब मुझे इनडायरेक्टली नेट प्रॉफिट ढूंढना है. सो यहाँ पे मैं लिखता हूं देयरफॉर नेट गेन और नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू, तो यहाँ पे लिखेंगे सेल्स प्लस डिविडेंड माइनस, तो ये हो जाएगा परचेज का प्राइस. Yes, so what is the sales value? So it is 373,625 plus dividend का value is 12,500, so हो जाएगा plus 12,500 minus purchase का value is 357. तो 357 नहीं बोलेंगे, 3,57,000 हो जाएगा, and this amounts to, हो जाएगा यहाँ पे rupees. So let us calculate 3,73,625 plus 12,500 minus 3,57,000. So the amount is 29,125. So 29,125 is the net gain. And last thing which we need to find is percentage return on investment. So यहाँ पे I will say percentage return on investment is equal to, तो क्या आएगा यहाँ पे, it is net gain upon 100 into, सॉरी नेट गेन है, परसेंटेज के टर्म्स में वैल्यू निकालना है. सो नेट गेन का वैल्यू ये आ गया अपॉन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट मतलब कहना इसे जितना पैसा मैंने इन्वेस्ट किया था मतलब मैंने परचेस के टाइम अमाउंट इन्वेस्टेड इज 3,57,000. सो इधर आ जाएगा अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू क्या आ जाएगा 100, and last thing which we need to write is 29,125 divided by 357,000 into 100, and this is equal to, so 29,125 into 100 करेंगे divided by 3,57,000, so this amounts to 8.158 आ रहा है. So I write it as 8.158 and इसको अगर मैं राउंड ऑफ करता हूं तो this becomes 8.16%. So with this question is done. We make a note of this part. We start with the next question. That is question number 31. Sonali bought 300 shares of face value rupees 100 at rupees 850 per share
After 3 months, she got dividend of 40%. After 8 months, she received 2 bonus shares for every 5 shares held. After that, she sold all her shares at rupees 1000 each within 3 months. The brokerage was 2% on purchases as well as sales. Find the percentage return on her investment. So यहाँ पे first everything is for purchase. तो यहाँ पे लिख देता हूँ for purchase. Number of shares ये दिया है सबसे पहले is equal to 300. Then we have the face value. Then we have the market price. So let's write both the conditions over here. So face value जो है it is 100 है and market price जो है वो है 850 per share. After this rate of dividend भी दिया है. Which is equal to 40% दिया है. Yes, it's 40%. And then we have the brokerage amount. तो यहाँ पे देखूंगा rate of brokerage दिया है. What is the rate of brokerage का value? So it is 2% है. 2%. So यहाँ पे मैं लिखूंगा since rate of brokerage पता है और market price पता है तो first thing which we find is the brokerage value. So brokerage is equal to rate of brokerage upon 100 into the market price. So it is 2 upon 100 of market prices so 2% of 850. So this amounts to rupees 17 हो जाएगा. So यहाँ पे I will write it as therefore purchase price per share is equal to market price plus brokerage. So this is 850 plus 17 ये हो जाएगा rupees 867. So purchase price per share is 867 आ गया. यहाँ पे number of shares भी दिया है. So we have amount invested is equal to purchase price per share into number of shares. This value is equal to ये हो जाएगा 867 into 300. So 867 into 300 will amount to 260,100 and ये हो जाएगा rupees. So ये हो गया amount invested. अभी यहां पे मैं कैलकुलेट करूंगा डिविडेंड पर शेयर पहले. डिविडेंड पर शेयर क्या आएगा? So it is my rate of dividend by 100 into the face value. So कितना आएगा? It is 40 by 100 of 100. So this amounts to rupees 40. So therefore total dividend is equal to dividend per share into number of share. So ये हो जाएगा 40 into 300. This is rupees 12,000 हो जाएगा. So
ये अमाउंट आ गया. नाउ ये परचेस रिलेटेड, ये डिविडेंड जो मिला वो भी परचेस रिलेटेड है. फर्दर सी व्हाट दे आर डीलिंग. कंपनी after 8 months she received 2 bonus shares for every 5 shares held. So यहां पे लिखते हैं 2 bonus shares for every 5 shares. Therefore, one bonus share will be there for every 2.5 shares. क्योंकि अगर 2 बोनस शेयर उसको मिल रहे फॉर 5 शेयर्स, तो 1 बोनस मतलब कहने से इसका आधा हो जाएगा, तो 5 का आधा हो जाएगा 2.5 शेयर्स. So therefore number of bonus shares is equal to 300 upon 2.5 and this amounts to, so 300 divided by 2.5 ये हो जाएगा 120 shares. तो ये हो जाएगा for total number of shares कितना हो जाएगा. So we say it is 300 plus 120, this amounts to 420 shares हो जाएगा. So ये हो गया 420 is what the total number of shares. And अब उन लोग ने दिया है कि she sold all her shares at ₹1000 each within 3 months. बट कहने से उस टाइम पे भी उसको ब्रोकरेज लगा, मतलब उस टाइम पे मार्केट प्राइस जो था इज इक्वल टू ₹1000 हो जाएगा. यस, रेट ऑफ ब्रोकरेज दिया है उस टाइम पे भी. अच्छा, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज नथिंग बट व्हाट, सेल्स का कंडीशन. यू शुड राइट दिस कंडीशन कि मार्केट प्राइस इज इक्वल टू ₹1000, रेट ऑफ ब्रोकरेज जो है इट इज 2% है, देयरफॉर brokerage is equal to into the market price. So we have this as 2 by 100 of market price is 1000. So this amounts to ₹20. एंड अब जाके देखो मैं यहां पे लिखूंगा सेल्स प्राइस पर शेयर इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस द ब्रोकरेज. सो दिस अमाउंट्स टू 1000 minus 20 and this is equal to ₹980 हो जाएगा. Therefore total sales value will be equal to sales price per share into total number of shares आ जाएगा. And this amounts to 980 into 420 and this is rupees. So let us calculate this amount as 980 into 420, 980 into 420, this amounts to 411600. So ये हो गया मेरा टोटल सेल्स वैल्यू, ये हो गया था मेरा अमाउंट इन्वेस्टेड मतलब परचेस वैल्यू, एंड ये है मेरा डिविडेंड. सो नाउ वी हैव नेट गेन इज इक्वल टू, it is total sales plus dividend and minus the purchase लिखता हूं.
So this amounts to 411600 plus it is 12,000 है माइनस ये परचेस मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड तो ये है 260100. So let's calculate this value. 4,11,600 आ जाएगा प्लस 12,000 माइनस 2,60,100. So ये हो जाएगा 163,500 rupees 1,63,500. Yes, so ये हो गया net gain. So please make a note of this part. We'll continue the sum further. Now over here we got the net gain as 1,63,500. We need to find the rate percentage return on our investment. मतलब यहाँ पे मैं लिखूंगा percentage return on investment is equal to net gain upon amount invested into 100. So this amounts to 1,63,500 into 100 divided by amount invested. And can I say amount invested is same as what? The purchase value. So we write it as 2,60,100. So this is equal to. So 1,63,500 into 100 divided by 2,60,100. And this amounts to 62.8604. And if we write this in terms of percentage, so it is approximately 63%. क्योंकि ये जो पॉइंट के बाद का नंबर है ये 5 या 5 से ज्यादा है तो we round off that to the next number. So that's the reason मैंने यहाँ पे लिखा है it's 63%. And can I say this is the sign for what? Approximately. So last में I'll say percentage return on her investment is 63% approximately. So make a note of this part, and with this the question is also done. Now with this we end the session over here. Thank you.